पे का एक क्वेश्चन है कि डिड यू लाइक कंसिडर किसी और फील्ड में जाना? बस MDCAT लेने के बाद अंदाज़ा लगा कि ये तो अलग सी पूरी दुनिया है। Hi everyone, welcome back to the Premed Podcast. I am Ved Vyas, Executive President at the Premed President Program at MedAngle Premed. So this episode we'll be talking about gap year, and this series is Beyond MDCAT and the Way Forward. We have Salik from Dow Medical College MS1. I would like Salik to introduce himself. Okay, hi guys. My name is Mohammad Salih. I am a first year at Dow. Um, I did my schooling from Nixer College, and before that, I was in the city school. And yeah, I am here to talk about my experience of the gap year and how I benefited from it. And I hope that after the conversation, a lot of other people who are in the same shoes as me, they can also benefit from my experiences. Also, guys, I would like to mention that Salik got into AQ as well. Salik sat for the MDCAT 2022 first, and then he took Yes. the gap year, and then in 2023 he got into AKU. He passed the test. Interview And भी the हो interview गया as था, well. and you went there for थोड़ा time as well, right? I did. So मेरा schedule ये था कि AQ has their classes till 5, right? And I got in Mm-hmm. and I had a couple of weeks to make up my mind. So what I would do is I would go to Dow in the morning, and from there I would go to AQ in the evening. And this happened for around 2 to 3 weeks before I had enough time to make up my mind, and choose between AQ or Dow. Right. So we'll be diving into the questions and all जो हमारे पास हैं gap year students के जो mostly questions होते हैं. तो सालिक, मैं टिपिकल पप्पू बनूंगा इस वाले क्वेश्चन पे, स्पेशली व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपने 2022 MCAT का रिजल्ट देखा था? Because like So the thing is, जो मेरा था first MCAT, वो बहुत ज़्यादा डिले हुआ था because of floods all over Pakistan. And इतना डिले हो गया कि I just lost hope because ना मुझे पहले से ही I do not want to be a doctor. I felt like both of my parents are doctors, and there was always the feeling कि maybe I am going into this field because of them, and maybe I am made for something else. And since my O levels, I wanted to go into finance and business. I was also going to apply, but I had a talk with my parents, and they're like, "तुम एक बार MDCAT दे दो. उसके बाद, if you don't get in, then we can let you choose your own path." And I gave the MDCAT half-heartedly, and I knew I could have done better. I could have studied. I could have chosen to spend my time much wisely. I could have chosen to actually put an effort, and I knew I had the potential, which I did not use to the fullest. इसलिए I saw the result. I did not get a good enough score to get into Dow or any other government college, and I felt disappointed in myself. That they wanted me to be a doctor, they wanted me to try once, and I did not give it my all. So that is what happened. अच्छा, so you actually wanted to go for finance or something, but you went Yes, for I MCAT. was like कि ये एक दफा दे देता हूँ. मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लूँगा. MDCAT आसान ही होगा कुछ मेरे और A level में I have straight A's and stars, and I was like कि MDCAT कितना मुश्किल होगा. 160 170 180 रन कितना मुश्किल होगा. तो वही थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के दिया, and I saw the score, and अच्छा score था. I mean, it wasn't that bad, but it was not enough to get into Dow or JSMU. तो ये था, and I was like चलो इसके बाद अपने शौक पूरे कर लूँगा. But I think the gap had changed me a lot, and now I'm in Dow doing MBBS, a field that I was not intending to go into first. अच्छा, तो आई हैड लाइक थोड़ा बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस. लाइक मेरा भी पहले कोई मूड नहीं था कि MCAT देना है या नहीं देना. आई जस्ट कुडंट फिगर आउट कि मुझे करना क्या है. तो MCAT वाज ऑनेस्टली, जितना मुझे लग रहा था इजी है एंड ऑल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल बुक्स पढ़ी हैं भाई.
कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हम्म। बट खैर, अगेन, तो कितना टाइम लगा था फॉर यू टू डिसाइड कि आई वांट टू गो फॉर गैप ईयर So इसमें, the thing is, आफ्टर द that my एमसीएट? elder brother is a third year at the IMC, and my parents, हम्म। they sat me down and they talked to me and they were like, Salik, you have the option to go to the IMC. हम लोग तुम्हें भेज देंगे because in the end we really want you to be a doctor. And I knew that I have straight stars. I knew my potential, and I'm not saying that it is not a good college. It is an amazing college with great alumni. But I wanted to try to go for a government seat. तो हम्म। मैंने तो मेरे जहन में आया कि चलो अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है एंड मैं खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लूंगा इस पूरे साल मैं देख लूंगा if the field is made for me. I will not go to the IMC. I will try once more to get into a government college because that is what they've been envisioning for me since I was young. So the decision to take a gap year was ASAP, was very instantaneous, and I already knew that I had to take a gap year. So either I choose something else, or either I retake the MDCAT or AQ test, and I have 2 to 3 months to decide it all. Either apply somewhere else, or either make up my mind and fully commit myself to this field. So it was instantaneous. A short answer. अच्छा, सो you gave the AQ test as well I did, yeah. 2022 में, and then फिर से you gave the 2023 में test and you passed. पहले you did it. Yes, Pele, I kind of made a mistake. AQ test has some form of negative marking. And what happened was I cleared the reasoning portion by a very good percentage. And in the sciences, I remember the cutoff was 62%. And I had a 61%. And I knew चार पांच सवाल थे which I knew मुझे इनका आंसर नहीं पता. And ऐसे हंसी मजाक में मैंने उनको फिल कर दिए. And जब AQ टेस्ट आया रिजल्ट आई वाज लाइक काश मैं फिल ना करता. Negative marking hui, and I was honestly upset at that fact because AQ is a very good university and everyone has that dream. हम्म। But I was kind of कि काश वो 2 3 4 5 negative marking वाले सवाल थे सवाल वो ना मार्क करता. And I knew my faults then. Makes sense. मैं भी गैप ईयर पे ही था 2023 में, and I just keep the MCAT इस साल. तो आई एक्चुअली हैड लाइक कुछ सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स कि मुझे भी पहले भी नहीं पता था कि AQ टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, एंड इट वाज अ क्लोज कॉल, आई वुड से. Hmm. बट खैर, अगेन, गैप पे का एक क्वेश्चन है कि डिड यू लाइक कंसिडर किसी और फील्ड में जाना, जैसे यू लाइक फाइनेंस, राइट? तो I did अगर कोई, as yeah, carry on. एंड सो आई वाज लाइक कि अगर आपको फाइनेंस पसंद थी तो कभी ऐसा सोचा कि मैं फाइनेंस की तरफ चला जाता हूँ इस साल के लिए, एंड आई स्टिल सेट फॉर द एमकैट, फिर देखते हैं क्या होता है, या व्हाट्स The गोइंग ऑन thing इन योर माइंड? is, as I said before, the MDCAT was extremely delayed. And November May, of course, no other university has their admissions open. So the gap year was the ultimate choice that happened and that I had to make. Baaki different fields, I could have gone to other fields within healthcare, but I wanted to devote myself and I wanted the gap year to make up my mind and to find what interests me. And I thought that having a lot of free time to think and to ponder over my life and where it is headed was very important for me क्योंकि स्कूल से बच्चा आपका 2 साल को I was 2 when I was sent to school. So I realized that ever since I was 2, I didn't have enough free time and I actually wanted some free time, uh, some free time because school के बाद O level, उसके बाद A level, it's a constant race, it's a constant rush, and you don't actually get enough time to sit back and relax and think. So I was like, मैं नहीं जाऊँगा कहीं और. I will use the gap year to its fullest. I will do things that make me happy. I will
look towards my hobbies, for example, cricket, the gym, reading, and others. And I will try to make use of this year क्योंकि उसके बाद तो वैसे भी 4 साल यूनिवर्सिटी के उसके बाद you start your life and you never get इतना free time ever again. अच्छा, तो यू हैड लाइक एक साल जो था वो यू वांटेड काइंड ऑफ ब्रेक। Not 1 साल MDCAT हुआ था delay. I feel like हाँ हाँ I हाँ। had around 7 to 8 months. Yeah, I तो had 7 to 8 months. एम कैट 2022 में आई थिंक नवंबर में हुआ था। I'm pretty much sure. And अगला MDCAT was in September. तो विद देम। और उसके दौरान जो एडमिशन था प्रोसेस वो क्या था जनवरी तक. I feel like I had 7 to 8 months. Yeah. मेक सेंस। तो इसमें कभी ये फील नहीं हुआ कि लाइक बहुत बोर हो रहा हूँ कुछ ना? डिड यू जॉइन एनी Nahin, लाइक? the thing is with me, I have a lot of hobbies. They say, jack of all trades. I could say I am one of that because I have a lot of hobbies. Either it be cars, either it be sports, either it be reading, either it be, a lot of things. So, I don't think I ever got bored in the gap year. बिकॉज आई वाज लाइक अच्छा इतना ज़्यादा फ्री टाइम है अब मेरा जब भी दिल चाहे क्रिकेट खेल सकता हूँ मेरा जब भी दिल चाहे जिम जा सकता हूँ जब भी दिल चाहे कोई भी किताब उठा के पढ़ सकता हूँ तो आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी इन द गैप ईयर एंड आई काइंड ऑफ मिस इट आफ्टर अच्छा। MBBS in around 3 weeks we have our locomotor module उसके बाद फौरन अगले दिन नया मॉड्यूल शुरू हो जाएगा which is a constant race a, and a constant stress on you. So I actually kind of missed the gap year and no, I was never bored. अच्छा, तो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू वर इनटू इन योर गैप ईयर? So in the gap year, I spent it trying to reading spiritual books. If you want to talk about it, I could, but I realized I lacked in that aspect, and within a free time, I could get back to it, I I could read more into it. I mostly read लाइक spiritual द books. स्पिरिचुअल एज इन लाइक सेल्फ Uh, हेल्पिंग वगैरह वाली बुक्स? um, you could say self-help, yeah. It was a mix of both self-help and then religion books, religious books. सो So एंड अभी हाउस योर med school life going so far? Like, my I med think school life is going pretty good, but again, I don't have any free time on me, and isliye I do miss the gap year. The life is good. I'm enjoying mid school. I'm enjoying now. I have amazing friends, and I can still make time for all of my hobbies, even though at times I am too tired to get to them, but I still try to show up because I believe that showing up is everything. Right? You have to show up, even if you don't feel like it. we are talking about hobbies, right? I feel like कि अगर आप थोड़ा अपने आप को भी इन्वॉल्व करते हैं ना ऐसी चीज़ों में जो आपको सच में थोड़ा बहुत रिलैक्स करें ऑल, इट्स काइंड ऑफ आप वो ब्रेकआउट वगैरह फील नहीं करते इन लॉन्ग रन। Hmm. क्योंकि आप थोड़ा बहुत जस्ट यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। कोई ऊपर आपको नहीं बोल रहा कि आपको पढ़ना है या ये करने हैं। तो इट्स काइंड ऑफ, आई फील लाइक इट्स काइंड ऑफ हेल्पफुल It is फॉर helpful, द किड। and I would say my parents helped me a lot throughout the gap year. They understood the fact that the kid is on a gap year, and as Pakistanis, we tend to talk a lot. So within the family and outside of the family, um, a few people were interested in the fact that a kid with straight A stars throughout O levels and A levels took a gap. But my parents were very supportive, and they gave me the option to do anything I wished in the gap year and after the gap year, as long as what I choose is something that is of good essence and it is something that it is something that I can see a good future with. Either it be BBS, it be something else. And and they let me focus on all of my hobbies during the gap year. Either it be cricket, उधर मैच पे जाना है यहाँ पे मेरा मैच है इधर इट बी द जिम के रात को जिम सुबह जिम इधर इट बी कि मुझे ये वाली बुक चाहिए एंड दे डिड हेल्प मी अ लॉट बट
the non-negotiable fact was that you have to do good things with your life, even if it is not MBBS. You have to go to a good institution and you have to make something out of yourself. And I understood that fact. राइट मेक सेंस सो लाइक ये जो गैप ईयर था 7-8 महीने, हाउ डू यू इम्प्रूव जो इनिशियल रिजल्ट था आपका 2022 वाले एमकैट से ओके, तो 2023 पे? मैंने इनिशियल MDCAT ये सोच के दिया था कि ए लेवल नॉलेज है मेरी अच्छी, ए हम्म। लेवल बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैं थोड़ा सा बुक एक बार रीड करके MCAT दे दूंगा, एंड दैट इज व्हाट आई डिड, राइट। एंड दैट वाज अ वेरी रॉन्ग मूव, बिकॉज MCAT देने के बाद अंदाजा लगा कि ये तो अलग सी पूरी दुनिया है। उसके बाद FSC बुक्स मैंने, उसके बाद मुझे पता चला कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, इवन दो द फिजिक्स इज द सेम, द केमिस्ट्री इज द सेम, but the दैट्स राइट। perspective is different, and मुझे थोड़ा लेट एहसास हुआ, MDCAT के बाद एहसास हुआ कि even though the concepts and the theory is the same, but the way you look at it and the way you solve things is different, and in the gap year that is what I focused on. Biology तो basic facts हैं, तो मैंने bio के facts एक पूरी cheat sheet बनाई, मैंने वो cheat sheet I would look at it every single day. I I would actually say मुझे अभी भी आपके पंजाब और फेडरल के बायो बुक पूरी याद है, because I focused a lot on the gap year, and I दैट्स and and I made my notes on physics and chemistry. I would watch YouTube videos, I would read the books, and then I would solve questions on MedAngle. बहुत अच्छे सवाल आते with explanations. तो मैं जहाँ भी मुझे थोड़ा हो मसला, the explanations really helped, and I made notes of every single thing. I would watch physics videos, I would write the formulas, and मुझे अभी भी I would say ज़्यादातर याद है. So the formulas, I would say FSC is based more on memorization than learning, which is what I had to get used to. For example, chemistry में in organic levels actually teaches you why it happens, but FSC is like you have to learn what happens, and I learned what happens. This is how I changed my perspective to studying in the gap year. सो यू मीन लाइक कि आपका जो गैप ईयर का मोस्ट ऑफ द टाइम था इट वाज कि जो आपकी कैम्ब्रिज में आपने नॉलेज थी ऑन उसको एक लर्निंग साइड पे रखा, या उसको एक साइड पे हाँ रखा, हाँ एंड मैंने फिर से स्क्रैच से शुरू किया, नहीं कुछ इट वो वाज भी थी। हम्म। मोर लाइक कि आपने उनको ऐसी फॉर्म में अल्टर किया कि एमकैट में एक्सेप्टेबल हो और एफएससी से उसको आपने सप्लीमेंट किया, राइट? सप्लीमेंट किया, यस, मैंने ए लेवल नॉलेज एक बैक एंड पे रख के अपनी फ्रंट एंड पूरी FSC बुक से भर दी। अच्छा, सो गाइस आपको अगर सालिक की तरह इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस पे, तो यू कैन गो थ्रू मेडएंगल प्रीमेड पे एक ड्राइव की लिंक है, यू कैन गो थ्रू द लर्निंग लिस्ट। उधर हमने फार्मूला चीट शीट जो भी है रिव्यू गाइड्स बनाई हुई हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। उधर सिंध के लिए अलग इन्फॉर्मेशन है, पंजाब एंड फेडरल के लिए अलग इन्फॉर्मेशन है। तो सालिक से थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा जितना सालिक अच्छा, ने दिया था। मैंने एग्जाम से पहले एक हफ्ते सिर्फ आप लोगों की चीट शीट्स ही पढ़ी हैं, जो आप लोग के हैं गाइड्स, लेकिन आई अग्री विद द फैक्ट दैट दे वर वेरी हेल्पफुल। सारा आपने बुक एक ही 20-30 पेज की चीट शीट में डाल दिया, but I still agree with the fact that if you make your own notes, if you write it with your own hand, your brain will remember it for a longer time. हम्म। अगर आप लोगों को अच्छा गैप निकालना है, do what I did, but then again, do supplement it with the MedAngle notes because they were very यस। helpful. मैं पूरी बुक तो एक दिन में नहीं पढ़ सकता था, तो मैं ये करता था एग्जाम से पहले, एग्जाम की सुबह I just went through the MedAngle guides. अच्छा, तो इस पॉइंट पे बाद में आते हैं, बट गाइस आप जो मेडएंगल पे इंफॉर्मेशन है लाइक जो ड्राइव की लिंक्स पे यू हैव रिव्यू गाइड्स जो कि आप एक दिन में पूरे में पढ़ सकते हैं ऑनेस्टली। मैंने भी पढ़ी हुई है, तो यू कैन गो थ्रू देम एक ही दिन में। लर्निंग लिस्ट पे वी हैव सम इंफॉर्मेशन जो आपको रट्टा लगानी पड़ती है, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आपको उसको गो थ्रू करना चाहिए। सालिक द It's क्वेश्चन इज good कि you it's good you mentioned MedAngle, because मैंने गैप ईयर पे अलग स- एक अलग से टेक्निक इस्तेमाल की थी, एक डिफरेंट टैक्टिक ऑल टुगेदर. तो व्हाट आई बेसिकली थॉट वाज
कि दुनिया में कितने सवाल होंगे। अगर आप ये तीनों बुक निकालो, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे बंदा कितने सवाल बना सकता है। तो what I focused more on was solving as many questions as I could and keeping them हम्म। in my brain. मैंने मेडांगल के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, which is a lot, which is definitely a lot, because मुझे पता है मैंने सॉल्व किए। एंड देन मैंने अलग से बुक्स लेके सब सॉल्व किए। एंड एट द एंड, अ वीक बिफोर द एमडी, आई वाज लाइक, मतलब दुनिया में कितने सवाल होंगे, मैंने इतने सारे सॉल्व कर दिए हैं, उसमें आधे तो आ जाएंगे बस, सब सवाल मेरे जहन में बैठे। तो आई फील लाइक दिस इज दिस इज a different tactic. It is unconventional, but it worked. Yeah. आई वुड कॉल इट इनकन्वेंशनल, बट इट्स लाइक कि आपको जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आप उतने ज्यादा वो होंगे, लाइक आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड ऑल, एंड यू हैव टू लाइक गिव प्रॉपर टाइम। क्योंकि सालिक ने जैसे बात की कि एक बुक से, तीन बुक से कितने ज्यादा ही क्वेश्चन निकल जाएंगे। दैट्स एग्जैक्ट पॉइंट, जितने मेड एंगल प्लेटफॉर्म पे हैं उससे कम ही निकलेंगे। दैट्स अच्छा, अ थिंग आई उस कैन वक्त अश्योर। चैट जीपीटी नहीं था, बट दिस इज अ ट्रिक आई यूज इन मेडिकल स्कूल, कि मैं वाइवा से पहले आई इनपुट द बुक्स। फॉर एग्जांपल, मैंने मैंने चैट जीपीटी पे आपका ग्रेज एनाटमी पुट कर दिया, एंड आई एम लाइक, extract all possible and relevant Viva questions from chapter 6, for example. So this is a trick I use abhi, but I wish ke उस वक्त वो होता चैट जीपीटी, दिखारी ना That's true, man. कर। Acha, so moving back to the questions we have. So what do you think about joining academies in the gap year? Like, would you suggest someone जो कि gap year पे जा रहा है वो academy join करे? Just like Honestly, yeah, Mhm. honestly, both is good. Personally, for me, I knew that the gap year was on me, and I needed to fix it myself. I needed to learn everything myself, and मैं कब तक किसी और को देखूं, बोलूं ये मेरा सेवियर, ये मुझे आंसर्स और क्वेश्चंस और पूरे कंटेंट स्पून फिट करेगा, और मैं फिर पढ़ के ले आऊंगा मार्क्स। फॉर मी, आई फेल्ट लाइक इट वाज नॉट नेसेसरी, बट आई डू एग्री, गोइंग टू एन अकेडमी डज हेल्प फॉर दोज जिनको एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइमलाइन मेंटेन करने में मुश्किल आती है, because academies have fixed times, and if you're a bit stubborn, yes, it would help. But personally, I felt like it would not help me as much as it would help others, because I was already uh, on a set schedule, I was already determined, I've and I was done with the spoon feeding. I actually wanted to fix this mess myself. अच्छा, तो how is your schedule वैसे during the gap year? Uh, um, During the gap year, I would wake up early. I would pray Fajr. I would go to the gym. I would come back home. Um, and then I would say, in the gap year, I dedicated at least 4 to 5 hours of studying a day. But that began after March, because I was not in Pakistan before March. The Jesse Aya, I knew I had to study. After March, it was at least 4 to 5 hours a day, and I would make sure कि जो मेरी पढ़ाई है, that happened in the early hours of the morning, ताकि पूरे दिन मेरे पास हो अपने लिए, जो मुझे मतलब पूरे दिन में जो भी Hobbies. करना, hobbies and other stuff. So I would start at 9 and I would go on until I could, and then when I was done, I would just be like आज के लिए बहुत है, but I made a dedicated schedule, a 90-day plan, because Mm-hmm. आपके फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री में there's overall around I would say 60 topics overall, 60 Uh, topics, 60 like तीनों chapters, सब्जेक्ट को मिला के। तीनों सब्जेक्ट को मिला के एमडी सिलेबस में, कुछ हाँ हाँ AQ हाँ। में there's 71, लेकिन 11 फॉर एग्जांपल बहुत सारे किंगडम्स और कुछ फिजिक्स के they're not in the MDCAT। तो हमारे पास 60 MDCAT से में भी there's, कम है शायद, दे आर लाइक yes, 53 और there's 54। I think 54 या 54। मैंने वो सब या एक शीट पे लिखे, सब एक शीट पे लिखे, and my schedule was like, I had a 90-day plan. I would dedicate I would dedicate around a day to each topic. I would watch.
I would watch videos, I would solve questions, and then I would test myself. I would make notes at the end of the day. I would test myself with everything I learned, and I would make sure कि मेरे जहन में बैठ गया, because इतना अच्छा, हाँ, तो वो तो उसके करता था। लिए तो उसके हम्म। लिए यू यूज लाइक द रिव्यूज रिव्यू गाइड भी आपने इसमें यूज की थी? रिव्यूज गाइड, मैंने आप लोगों के रिव्यू गाइड्स आई यूज्ड इट बिफोर द एग्जाम्स, because I was हाँ done हाँ। before the exams. I was like बहुत पढ़ लिया मैंने पिछले 2-3 महीने, अब और नहीं होगा मुझसे, because I knew that the amount of studying I did, it was enough to get uh, a good score for DAO. So I was like, अब मुझे ना 200 में से 200 नहीं लाने. I am done. I will not revise anymore. I will just use the medical guides. अच्छा, तो यू वर सॉल्विंग एमसीक्यूज शुरुआत से ही मेडैंगल पे, जी, लाइक uh, शुरुआत से ही जैसे टॉपिक्स पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर देख लिया, यू वर गोइंग थ्रू द एमसीक्यूज एज वेल उसी yeah. टाइम? So what I would do is एक टॉपिक एक दिन, उसके उसके फौरन बाद वो टॉपिक की मैंने वीडियोस देखी, वो मैंने बुक से पढ़ा, एंड आई यूज पंजाब, सिंध एंड फेडरल बुक्स, मतलब तीनों यूज किए, कुछ यू नेवर नो कि आपका पीएमसी आपका पीएमडीसी कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी वो लोग नेशनल एप्लीकेट कर सकते हैं, कभी भी वो लोग अपने शहर का ले सकते हैं। पाकिस्तान में ये जो पीएमसी वर्सेस वर्सेस पीएमडीसी की चीज़ है, दिस इज अ मेस. सो आई वांटेड टू कवर ऑल बेसिस. आई स्टडीड फ्रॉम सिंध फेडरल एंड पंजाब बुक्स. उसमें थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता था, एंड देन आफ्टर दैट आई वुड सॉल्व एमसीक्यूज फर्स्ट फ्रॉम मेडांगल, एंड देन जो आपकी बाजार में उर्दू बाजार गया था, there were 2 to 3 books with a lot of MCQs. Then I solved those. Then I figured कौन से MCQs में मेरा हो रहा है मसला, um, and then I would read those concepts more. And by the end of the academic session जो 4-5 घंटे का था, I would say uh, I developed a very good grip on that topic. So this राइट। was how I सो studied. सो लाइक 10-11 घंटे लगते थे टोटल टू गेट अ ग्रिप ऑन द एक टॉपिक पर्टिकुलरली? No, it depended on topic to topic. मैंने हाँ बायो मतलब बहुत जो जल्दी लाइक, निपटा दिया था. बाकी बाकी फिजिक्स में there's a few chapters that were pretty easy for me. For example, work energy power, वो तो बचपन से लड़का पढ़ रहा है कि ये आपका हम्म। kinetic energy है, ये आपकी gravitational energy है, ये वो आसान था. But then a few topics जो मैंने पहले नहीं पढ़े थे, for example electronics, for example modern physics, उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे समझने थे, एंड थोड़ी जगह आई फाउंड इट अ बिट हार्ड. बट बाकी थे टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल जो मैंने कवर करना चाहा, उसमें तो टाइम नहीं लगा था. तो इफ यू लाइक सम अप दिस क्वेश्चन कि आपने लाइक आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या थी जो आप दूसरों को सजेस्ट करेंगे कि जो गैप ईयर पे है, तो विल गो एज इन लाइक कि आपने बुक्स भी पढ़ी थी, आपने पहले लेक्चर देखे, यू वेंट थ्रू द एमसीक्यूज, बुक्स भी पढ़ी थी, एंड देन यू जस्ट टेस्टेड योरसेल्फ, एंड जो गलत एमसीक्यूज कर रहे थे आप उनको आपने नोट किया था कि आप कहाँ पे वीक हैं, कहाँ पे नहीं। या यस, आई तो वांटेड टू कवर ऑल बेसिस. या तो दिस इज लाइक आप ये एमडी कैट और एकीयू दोनों जो दोनों को स्टूडेंट्स लेके जो चला. दोनों। तो हाँ। जो मैंने कहा था ना कि मैंने AQ टेस्ट से 3 महीने पहले एक 90 डे प्लान बनाया था. तो अच्छा। वो जो था 90 डे प्लान, उसमें आई वुड डू अ टॉपिक अ डे, एंड इट वाज ओवरऑल अराउंड 72 टॉपिक्स AQ टेस्ट में थे. उसके बाद आई हैड 18 days टू रिवाइज इट ऑल. तो वो जो मैंने राइट। AQ टेस्ट के लिए प्लान बनाया था, उसी में MD कैट मेरा कवर हो गया था. राइट। सो हाउ डू यू लाइक कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आई फील लाइक कि ये जो चीज़ है उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद गैप ईयर लिया था जैसे, तो आई थिंक दिस वाज समथिंग जो मैं भी जिसमें स्ट्रगल कर रहा था। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस कि हाउ डू दे ओके, कीप सो देमसेल्फ मोटिवेटेड? आई वुड से, इवन इफ यू वांटेड टू take a gap year, even if you are good with it, even if you're happy with it, at the end of the day, you are still human. You still know that you wasted an year of your academic life is gone.
and your friends, they're in colleges, they are studying while you're at home. So I do agree with the human aspect of it, because yes, we are human and we feel. But मेरे लिए motivation was not hard to find. I knew I created a mess. I knew I was in a mess, and I knew I had to fix it. I knew there was no one coming to save me, and I had to save myself. I had to fix it. I had to be better. I had to do more. So I would say a few months before the tests, I kind of developed, you could say, a tunnel vision. I saw a goal, I saw a dream, and I knew I had to do everything in my power and might to fix that dream and to reach that dream. I would wake up every single day and I would say to myself, okay, this day has to be productive. I have to do something good, because if I don't do well in these few months, I might not be able to reach my dreams, and I might not be able to reach what I've envisioned for myself. And at the end, it was all about, there is this quote that I read of Instagram or something. Okay, to be where you have never been, you have to do something you've never done. And I've never followed a schedule. I have never studied this hard. मैं ओ लेवल के पेपर बस मुंह उठा के चला गया था. ए लेवल के पेपर एग्जाम से एक हफ्ता पहले पढ़ के चला गया था. मैंने लाइफ में ये मैंने पहली बार इतना पढ़ा है. तो again, to be somewhere where you've never been, I had to do things I have never done, and I had to do it. I had no other option. I had no other choice, and if I did not do it, uh, I don't know where I might end up. So there was no other option, which kept me extremely motivated and going throughout the months. Right. That does really make sense कि हम जैसे ही like एक पूरा साल होता है तो I think you just have to keep yourself in check and just You have to keep थोड़ा the बहुत negative thoughts hobbies. away. Of course, you are human. You will have negative Mm-hmm. thoughts. You will have positive thoughts. You will have all kinds of thoughts. But it is up to you to keep the negative thoughts away, to keep them in a side, and to tell yourself कि जो होना था वो हो गया. अब मैं इस पोजीशन में हूँ. अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए. तो Right. जो होना था वो Just हो गया. अब आगे बढ़ो. perfect. So we have one last question. Like, as you know, taking a gap year can have different outcomes for pre-med students. तो किसी का एडमिशन हो जाता है अपने desired medical college में किसी का नहीं होता. And this actually raises the question, is taking a gap year actually very much worth it for those who are less fortunate? This question is good, and the answer is pretty subjective. I would say at the end it boils down to the fact कि जो होना था, जो होना होगा वही होगा. I have Mhm. friends who have wanted to be doctors since I knew them, and now they're doing a lot of different things. Some are in IPA, some in Pulam, some are abroad. And sometimes when I talk to them, I do bring up this fact: okay, what if you tried again? And what if you've actually gotten med school and you went to med school? And they answer ke, Alhamdulillah, they are happy. And they answer ke, I am happy where I am. And I feel like this is what life has written for me. And I'm glad that they have reached that point in their lives where they are accepting of everything that has happened. Um, so इट इज नॉट फिक्स्ड कि ये बच्चा इसको इस चीज़ का शौक है ये यही करेगा. You have to be flexible. You have to give it your all. You have to try hard for the MDCAT. You have to try hard for the AQ test. But even if that all isn't enough, then you have to accept it. Um, and someday or the other, you will accept it. You will be happy, and you will find purpose in life, just as most of my friends have. So I would say, don't be disheartened. Um, सब कुछ लिखा हुआ है. At the end, it all comes down to spirituality. It all comes down to acceptance. And the sooner you reach it, the
the brighter and better your future will be. You just have to accept it. So I actually went by this line, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. जब मेरा भी MCAT जो था, it was all messed up and I was like यार क्या करना है, तो I was like यार जो होता है अच्छे के लिए होता है. I just lived by this line पूरा साल. खैर, here we are, and Salik had amazing tips and tricks to share with you all. Like Thank you. he got into AKU इसी I साल. did, yeah. Yeah, and you went there as well for kuch time, and but you decided to go for DMC. Yes, that is, AKU again is one of the most prestigious universities in Pakistan. So, guys, he got in. So, of course, he has some, kind of a value. Uh, the tips I and don't go tricks. to AKU though. A funny story कि मैं जब भी किसी को बताता हूँ I got in AKU and I actually got the aid and the scholarship as well. And then I chose Dow, yet I chose Dow. They don't understand. They're like, this guy has gone nuts, he's gone insane. But I had pretty good reasons for it, and लोगों को नहीं आएंगे समझ में, तो it's better not to explain. But I did what I had to do, and अभी जब admissions close हुए 6-7 महीने हो गए, I can say I am happy where I am. So at the end of the day, you just have to accept where you are and you have to live with it and you have to make the most of it. Right. That's like whole purpose, right? जहाँ पे आपको you have to make most out of it, क्योंकि देखो most out of it. आपकी लाइफ आपको लगता है कि you have control over it, but you don't really have control over it. You've been given chances in life. You've been born somewhere. दुनिया में जो कुछ हुआ है, you've been put in places. So you think you have control over it, but you don't really have control over it. You have to accept it. Right. Yeah. So, guys, whatever he had to say was, I hope that was like very helpful to you all. And he presented his point of view कि उनके लिए gap year कैसा था. सालिक के लिए, Salik is again, he got into AKU. He is Dow Medical College में MS1 this year. And yeah, uh, thank you so much, Salik. Thank you so much for your like tips and It was an honor being your here. Thank you guys for having me. Um, After using your platform and now being a guest on a podcast, it is of much importance to me, and I'm grateful that you guys chose me for this Gap Year podcast. So thank you. Thank you so much, Salik, for your lovely words. Guys, thank you so much to you all for like staying till the end. I would just like to mention one thing कि premed.net.pk is a fully free platform जहाँ पे you can find 25,000 plus MCQs for your MDCAT preparation. Regardless of any specific province wise वगैरह, हमारे पास general questions हैं, हमारे पास हर province के questions हैं. Then we have review guides जो आपको end वाले days में help करती हैं, जैसे सालिक को किया था, right सालिक? Yeah. Yes. We have learning list, आपको रट्टा लगाना है end वाले days में, तो you can go through our learning list. We have जैसे mock exams होते हैं, AKU के mock exam हो गया, MDCAT का mock exam हो गया, आपको अपने आप को test करना है. We have those on our platform as well. They are completely free. And then we have feedback mode, जैसे कि आपको चाहिए कि आपके ऊपर एक ट्यूटर खड़ा हो, आपको 1 मिनट के अंदर एक ही क्वेश्चन करना है, जस्ट लाइक टाइम्ड मोड है. ये एग्जैक्टली सेम थिंग कि आपको 1 मिनट के अंदर एक ही क्वेश्चन करना है. तो वी हैव टाइम्ड मोड एंड फीडबैक मोड में यू कैन गेट द डिस्क्रिप्शन कि कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, एंड आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि कैसे इसका आंसर हो सकता है. And I would like to thank you all for staying till the end. And we will be concluding this podcast by this. And thank you so much, guys. Thank you so much for sticking till the end.